जय श्री राम मित्रों, आशा राखું છું તમે બધા મજામાં હશો। મિત્રો નવા હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ અને વિડીયોને લાઇક કરવાનું ના ભૂલતા। તો આપણી સ્ટ્રેટજી પ્રમાણે કઈ જગ્યાએ ટ્રેડ બનતો હતો તે જોઈશું આપણે। તો અહીંયા જોઈ શકો છો, આ પ્રીવિયસ ડે હાઈ છે, પ્રીવિયસ ડેનું ક્લોઝિંગ છે અહીંયા, અને પ્રીવિયસ ડે લો આ જગ્યાએ છે। તો માર્કેટે અહીંયા प्रीवियस डे क्लोजिंग ने नीचे बेरिश कैंडल क्लोज करी थी। आ कैंडल ऊपर आपणे एंट्री बनती थी, परंतु आपणे एंट्री न लेवानुं कारण ए हतुं के आ कैंडल ऊपर केम के प्रीवियस डे लो पण नजीक हतो, એટલે આપણને ટાર્ગેટ ઓછું મળી શકે એમ હતું। એટલે આપણે વેઇટ કર્યું અને પ્રીવિયસ ડે લો હતો એને બ્રેકડાઉન થવાની રાહ જોઈ। તો આ કેન્ડલ ઉપર આપણે એન્ટ્રી બંધી હતી 9:35 कैंडल 9:30 कैंडल पर एंट्री बनती थी। अपने इंडेक्स में 5 मिनिट रखता हुए और प्रीमियम चार्ट पर 1 मिनिट। तो 9:30 એટલે 9:30 એટલે 9:35 कैंडल पर आप જોઈશું। तो 9:35 कैंडल आ रही। तो 9:35 कैंडल आ है पण रिजेक्शन वाली है ने बेरिश कैंडल है, तो આપણે चाहिए बुलिश कैंडल। तो अहींया તમે જોઈ શકો છો, आ बुलिश कैंडल बनी थी आ जगह, आ बुलिश कैंडल बनी थी अने आमां एंट्री बनती थी 412 पर। आपणो स्टॉप लॉस हतो 397 अने टार्गेट मळ्यो हतो 480, એટલે 67 पॉइंटनो टार्गेट मळ्यो हतो आपणे 15 पॉइंटना स्टॉप लॉस साथे। तो आ ट्रेड पण आपणो सारो गयो हतो। जो आ स्ट्रेटजी तमारे शीखवी होय तो चेनल पर लॉन्ग विडियो छे, जईने जोई शको छो।